and that is custom formatting. See, what else we can do is I can click here and I'll get the same window here. यहाँ पे दिख रहा है आपको, numbers भी मिल जाएंगे. You can use a separator like comma वगैरह भी दे सकते हो, decimal points. Currency में जैसे rupees symbol was by default, so you can choose any other symbols, dollar वगैरह, accounting, date, time. ठीक है, these are some different things. समझ में आया ना? ठीक है, आप यहाँ से भी choose कर सकते हो. Clear? Hello? So rather than choosing it from here, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी choose कर सकते हो. ठीक है? Okay sir. Okay, but what I need to tell you, see, अब मान लो कि अभी कभी कभी आप टेबल्स बनाओगे. ठीक है, अभी मैं फंक्शन से बता, क्वांटिटी है एंड दिस इज अ रेट हियर, और यहाँ पे आपका टोटल है. तो व्हाट आई नीड टू डू इज, आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक अभी मैं सिंपली क्वांटिटी इनटू रेट होता है ना आपका, है ना, दिस इज द टोटल, लाइक इफ आई एम हैविंग 5 kg एंड द रेट इज 20, so to give me the result. क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना? Yes sir. Now what if I want to write like 5 kg और ₹20, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है ना? Yes sir. Yes sir. क्योंकि Yes, जैसे sir. मैंने kg ऐड किया, नाउ दिस इज नॉट अ नंबर, ये क्या हो गया, फिक्स्ड बन गया, राइट, है ना? बट स्टिल यू वांट टू शो दिस kg एंड रुपीस एंड यू वांट टू डू द कैलकुलेशंस आल्सो. तो आप कैसे करोगे, देखो. तो इन दिस केस व्हाट वी नीड टू डू इज, देखो, आई विल सिलेक्ट दिस सेल्स, आई विल गो टू दिस फॉर्मेट एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कस्टम हियर. कुड यू सी दिस कस्टम? Yes sir. Click on this custom and then here you write what? Hash. Hash is represented as a number, ठीक है? And then आप क्या करो, डबल कोट्स के अंदर में you write a kg. समझ में आया? You write what? kg. ठीक है, डबल कोट्स. और जैसे आप क्लिक करोगे, सी, सिमिलरली मैं रेट को भी सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे. I'll click here, go to this custom and then write here what? This hash symbol is represented by a for a number. ठीक है, रुपीस को अगर मैं डॉट्स में भी करना चाहूँ तो रुपीस मेरे को आगे ऐड करना है, तो डबल कोट्स में मैं रुपीस ऐड करूंगा एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल राइट दैट हैश सिंबल हियर. समझ में आया? Yes, sir. और फिर मैं ओके करता हूँ. नाउ सी व्हाट विल हैपन. अब अगर इफ आई एम राइटिंग एनीथिंग हियर, सी, ऑटोमेटिकली इसमें kg आ रहा है. Yes sir. If I'm writing anything here also, see, ऑटोमेटिकली आ रहा है यहाँ पे. अब यहाँ पे मैं कोई भी कैलकुलेशंस अगर कर रहा हूँ तो इट इज डूइंग द कैलकुलेशंस. सी, इट विल डू द कैलकुलेशंस. समझ में आया ना? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इट विल शो, इट विल नॉट अप्लाइड एज अ टेक्स्ट. इज इट क्लियर? Yes sir. Okay. Similarly, there is one more thing I need to tell you in this formatting only. जैसे कि फिर भी चलो, आप you don't want to convert it into a like 23 करते तो मेरा जीरो गायब हो जाता है ना? But you don't want to convert it into a text. तो in that case आप क्या करोगे? See, so I'll select the columns से जितना भी मेरे को चाहिए. I'll go to this custom format and then I will put number of zeros I want. Like I want 5 zeros, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros मैंने यहाँ पे कर दिया. Then I'll click OK. See what is happening. So if I'm writing 56, so it will just 569, 4569. So it will automatically add the zeros in the front. समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. Okay. So this way also you can use to represent the zeros. ठीक है? Yes sir. Sir. So this is the thing for today's Excel. I just wanted to make you familiar with the environment. ठीक है? From the next day we will start the main Excel part. ठीक है? I hope the topic is clear. If you want to ask anything, please ask. Sir, can you repeat dates once again? Dates, sure. देखो, if I'm writing, I'll just take one more thing. चलो, मैं एक और sheet ले लेता है. Now, if I'm writing any number, right? और मैं date पे अगर convert करता है, it is giving me a date. अयो, ये Chinese कहाँ से आ गया? Anyways, ये मेरे को एक date दे रहा है ना, है ना? Could you see this 25/01/1900 है ना? Hello? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इज द डिफॉल्ट डेट व्हेन इन अ कंप्यूटर व्हिच स्टार्ट्स इज 0101, दैट इज 1900. समझ में आया? 0101/1900 इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ फॉर आवर कंप्यूटर. तो जब भी इफ आई एम गिविंग एनी डेट, एनी नंबर, ठीक है, और फिर मैं इसे अगर डेट में कन्वर्ट करता हूं, सो व्हाट इट इज एक्चुअली डूइंग, इट इज एक्चुअली कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे. यानी 0101 से वो 25 डेज को उसने क्या किया, काउंट किया. ठीक है,
और उस दिन का जो भी डेट होता है वो आपको दे देता है। समझ में आया? Yes, sir. If I'm giving 32, so like 0101 1900 is starting from 0101 1900, that is January, and January has what? 31 days, right? So 32 days क्या होगा मेरा? 1st February होगा ना, if I'm going to count it, है ना? Yes, sir. So if I'm converting this 32 to a date, see what it will do. 2nd Feb दे रहा है, देखो पहले आपका year, then the what? Month, and then the day. Correct? समझ में? Okay, sir. Yes, yes. So this is the data thing. Clear? Try it in our computers. कोई problem होगा then please do let me know. ठीक है?